I am worthy, I can do it, I love myself, I believe in myself. These are the things that we need to tell ourselves more often. Before we start our today's video, it's me Insia Kulsaala. So today's video is all about fitness, basic fitness tips for beginners. Let's start and set some fitness routine together. Before we set any goals, we should need to understand our body, we need to understand our system, we need to assess our body. So how can we assess our body? So before assessing our body, we need to understand the consistency is the utmost important key to maintain any routine. So assessment includes your medical assessment, like what problems are you facing, what diseases do you have. It could be PCOD, thyroid, hypertension, any such things. You may be suffering from any pain management, like knee pain, back pain, or you may had to had any surgeries or any XYZ. So we have to and we need to take those things in our mind. After that, we need to understand our body immunity, stamina, how your body is allowing you to do how much, right? Also, while starting on the very first day, you should always take your body measurements, with that includes from neck to toe. It could be in inches or centimeter. You should measure your height, your weight, so that you can calculate the BMI thing. How does that help you? That will make you happy when you conquer any small or big results. By results, I mean it could be physical, it could be in the number of weighing scale, it could be your energy level. So if you have the results of day 1 versus day 15 or day 30th, that will motivate you to do more and more. So it is very important to keep a track record on your physical assessment. So this was about what your physical assessment includes. Now let's come to achieve and set some achievable goals in short. So what is achievable goals? कि मुझे एक महीने में 30 किलो कम करना है. No, that is not going to help you. You should you should make some goals in such a way that leads you motivates. It could be a 1 kg or 2 kg in the starting. Whether चलो kg हम लोग नहीं set करते. It could be like you need to feel energetic. You just need to maintain your routine. कई बार क्या होता है, हम लोग स्टार्ट तो कर देते बट हम लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. वी ब्रेक अवर कंसिस्टेंसी. एक दिन क्या, अरे सोरनेस आ गया, बहुत पेन हो रहा है, अब नहीं होगा. नेक्स्ट डे एक दिन रेस्ट कर लेती हूँ, एक दिन में क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा. फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है. इट कैन डिस्टर्ब योर रूटीन. So it's better to set an achievable goal. You can start with 5 days a week, maybe initially 30 minutes a day, more than enough. Once you are used to this routine, try this routine for a week or 10 days, then you can gradually increase. By 30 minutes you can go for 40 minutes, after 40 minutes you can go for 16 minutes onwards. So yeah, and not more than 60 minutes. Got you. Not more than 60 minutes. लोग कहते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटे का वर्कआउट, 2 दिन का वर्कआउट साथ में कर लेंगे तो हमको इतना सारा बेनिफिट हो जाए. नो, it's not going to help you. Rather it will damage your routine, or it can lead to some unwanted problems that can give you a soreness in your body, or your body might not accept that harsh workout. So do not set that goal. Maximum 60 minutes is more than enough. Initially 5 days a week, then you can start, set it for a week, daily, Monday to Sunday, right? So this is how we set our routine. Next thing, you need to set your journal. Your journal includes by journal I mean fitness journal. You do not need to set your throughout day कि भाई आज मुझे दिन में ये करना है, मुझे वो करना है. No need of that. Here we are talking only about fitness journal, right?
बाय फिटनेस जर्नल आई मीन कि आपको एक रूटीन सेट करना है कि बाय व्हाट टाइम आई वेक अप, उठने के बाद मेरा पहला काम क्या होता है, व्हाट आर माई प्रायोरिटीज़ वर्क। इफ़ यू आर अ मदर आई नो बच्चे स्कूल जाते हैं, यू नीड टू सेंड देम स्कूल, यू नीड टू गेट देम रेडी एंड लंच बनाना होता है, सो देर आर प्रायोरिटीज। बीइंग अ मदर आई नो दैट थिंग्स वेल, राइट? सो नो नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट रूटीन। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा वर्कआउट आई मीन मॉर्निंग में ही करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट ज़्यादा बेस्ट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड टू एक्सेप्ट योर रूटीन, you need to respect that your routine so that you can be consistent। आप एक दिन अपना स्केड्यूल कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक कर लोगे, बट आफ्टर अ वीक दैट विल बॉदर यू एंड दैट मे लीड्स टू अनकंसिस्टेंसी, राइट? एंड वी डू नॉट वांट दैट। सो सेट योर प्रायोरिटीज़, what things you need to do, कौन से टाइम पे आप फ्री हो। इट कुड बी नून टाइम, इट कुड बी मिड मॉर्निंग, इट कुड बी इवनिंग, इट कुड बी लेट नाइट वाइल बिफोर स्लीपिंग। सो जो टाइम आपका स्केड्यूल अलाउ करता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्कआउट, बट ट्राई टू मेंटेन दैट रूटीन। अगर आप अपना टाइम रात को सेट करते हो देन ट्राई डूइंग आप उसी टाइम पे कल करो, राइट? एक दिन आपने रात में कर लिया, एक दिन में कर लिया, एक दिन शाम को कर लिया, सो दैट मे लीड यू नो अनकंसिस्टेंसी एंड योर बॉडी माइट टेक टाइम टू अडेप्ट दैट लाइफ स्टाइल एज वेल। जो चीज़ आप एक वीक में कर सकते हो शायद आपको वो सेट करने में 1 महीना लग जाए, और वो टाइम रूटीन आपकी बॉडी एक्सेप्ट करने में यू माइट लीड लूजिंग योर पेशेंस, राइट? एंड वी डू नॉट वांट दैट। सो बेटर फिक्स अ टाइम, whatever time suits your routine, right? Also ask question, what is your body requires। किसी चीज़ कोई बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे स्ट्रेचिंग चाहिए, आई मीन मुझे फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए, या मुझे एक टोन अप बॉडी चाहिए, या आई वांट टू लूज वेट, और आई वांट टू क्योर माय डिजीजेस, और देर आर गोल्स लाइक मुझे फिटनेस, मेरा पूरा फिगर तो ठीक है बट मुझे मेरा फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे और टोन अप करना है, और आपकी बॉडी ऑल टोन है तो योर गोल्स माइट बी कि मुझे एब्स चाहिए, या मुझे अपने ग्लूट्स शेप में चाहिए, या मुझे स्ट्रेन ट्रेनिंग ज़्यादा करना है। तो यू शुड नो कि व्हाट योर बॉडी नीड्स एंड व्हाट एग्जैक्टली योर गोल्स है, बिकॉज द फैक्ट इज फैट एक जगह से आएगा नहीं, एक जगह से जाएगा नहीं। वॉट एवर योर गोल इज यू नीड टू वर्क आउट overall, right? So these are the basic things that you need to follow. Furthermore, decide the days of workout. For example, if Monday you're doing CrossFit, then Tuesday could be mat workout, Wednesday could be cardio, Thursday could be HIIT workout, or anything. It could be according to your decided days. But always have a mentor or a trainer with whom you can discuss your daily routine, your number of reps, your number of sets, what exactly workout you should follow in a pattern, so he or she can guide you more better. I am there to help you. Connect with me if you want any such guidance. Also, last but not the least, have a healthy eating habit. We will make a detailed video on this, how to maintain that. So if you are new to this channel, subscribe this channel and hit a bell button so that you do not miss that video coming near soon. So coming back to the healthy eating habit, cut down salt, sugar, cut down your portion or control your portion. If you're eating 4 chapatis, have 3. If you're having 3, have 2. So that is a basic funda, but you are already having 1. Do not cut down that as well, because that is much needed nutrients. Add some fruits, vegetables, have enough water, have a good sleep, which is minimum 7 to 8 hours a day, or a night maybe, of course. So that will give you a good impact on energy level as you are starting your fitness journey. So this is a conclusion, and I hope you are liking this video. If yes, then show some love, share this video to your loved ones, whom do you care, and we'll keep coming with new content, new videos to give you the best that you deserve. See you until next time.